दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। मैं मारुति तिवारी आज आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, जो एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, और वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन मैं आपके लिए इसको बहुत सिंपल बनाने वाला हूं। और सिर्फ सिंपल नहीं, मैं आपके लिए इसको एंजॉयबल बनाने वाला हूं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस तरह की स्टडी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये फैंटेसी वर्ल्ड आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप इवॉल्व करने वाले हो, जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप सीखने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है एग्जैक्टली? सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि मैथमेटिक्स क्या है। फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, उसको उसकी एनालिसिस करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। जैसे मोशन एग्जिस्ट करती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। F इज इक्वल टू ma। तो मोशन एग्जिस्ट करती है, उसके लिए आप F इज इक्वल टू ma लिखते हो। कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और उस एग्जिस्टेंस को मॉडल करने के लिए, उस एग्जिस्टेंस की एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक मैथमेटिक्स है, F इज इक्वल टू ma। इसमें अगर आप a को रिप्लेस कर दोगे dv बाई dt, तो ये बन जाती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, F इज इक्वल टू m dv बाई dt। और अगर आप v को भी रिप्लेस कर दोगे dx बाई dt, तो ये बन जाएगा एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। Cool. So there is something existing in the physical world, and to represent it, to model it, you take the help of mathematics. There is something existing in physical world, and to model that physical world, you are going to take the help of mathematics. There is some physical world, physical existence, and then you make a mathematical model for it. For example, if a body is subjected to some force, you know that it's going to have some acceleration. एंड उसके लिए आप एक मैथमेटिकल मॉडल न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू देखते हो, F इज इक्वल टू ma, या फिर आप a को लिख सकते हो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, और इस तरह से एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा हो जाती है। या फिर आप देखते हो हीट ट्रांसफर। इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ बॉडी is existing, the temperature difference is existing, there is some temperature difference, there is some thickness of the body. This whole physical phenomenon can be converted into a mathematical model with the help of Fourier's law. Fourier's law says that rate of heat will be depending upon material, rate of heat will be depending upon area of heat transfer, rate of heat will be depending upon temperature gradient. And this is how you make it a mathematical model like this, that Q is equal to Ka dt by dx. You see, there is a physical world and आप उसको मैथमेटिकली मॉडल करते हो। बट पहली दफा आप एक ऐसी मैथमेटिक्स करने जा रहे हो जिसका कोई फिजिकल वर्ल्ड नहीं दिखता, और वो मैथमेटिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैथमेटिक्स। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये एक फैंटेसी है, ये एक दिमाग का फितूर है, लेकिन धीरे 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 मैं आपको उस इमेजिनरी, उस काल्पनिक दुनिया से बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनन पैदा करके दिखाऊंगा। स्टार्टिंग, यू आर गोइंग टू, ऑफ कोर्स, this is the first time you are going to learn a branch of mathematics where you are going to enter into the mathematical world, and that mathematical world will seem like a non-existing world. And I promise you that initially it will feel like it's a non-existing world, but from that non-existing world, from that imaginary world, I'll create multiple physical phenomena. So what is that imaginary world? वो काल्पनिक दुनिया एग्जैक्टली है क्या, समझते हैं। जब आप अंडर रूट फोर इवेल्युएट करते हो, तो आप उस अंडर रूट 4 की वैल्यू लिखते हो +-2। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर +2 भी स्क्वायर करोगे, सिंस यू नो दैट +2 का स्क्वायर करोगे तब भी आप 4 लिखने वाले हो, और आपको पता है कि अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तब भी आप 4 लिखने वाले हो। जब आप तो कोई कहता है √16 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहते हो +-4। क्यों? क्योंकि आपको पता है, सिंस यू नो, कि अगर मैं +4 को भी स्क्वायर करूं तो मुझे 16 ही मिलने वाला है, और अगर मैं
-4 का स्क्वायर करूं तो भी मुझे 16 ही मिलने वाला है। बट अगर मैं आपसे कहूं √1 ये क्या होगा, तो आप बोलोगे किसी भी चीज का स्क्वायर -1 हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज का स्क्वायर -1 हो ही नहीं सकता। और इसलिए आप बोलोगे कि ये एक नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन रियल थिंग हो गया। सिंस किसी भी चीज का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी लॉजिक से हम चल रहे हैं कि √4 को जब हम +-2 लिखते हैं तो इसलिए लिख पाते हैं +-2 क्योंकि हमें पता है कि +2 का भी स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। When we write √16 as +-4, we know we are able to write this because +4 square will also be 16 and -4 square will also be 16. But when we are having √(-1), we know it's an unreal thing. Why? Because no real number will have its square becoming negative ever. Let's give that non-real thing a name. उस अवास्तविक चीज को, उस काल्पनिक चीज को एक नाम दे देते हैं, लेकिन नाम तो उसको दिया जाता है जो एग्जिस्ट करे। ये आपके दिमाग का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक फितूर है कि अगर ऐसी नॉन रियल चीज को भी मैं एक नाम दे दूं, ऐसी नॉन रियल चीज को भी मैं एक नाम दे दूं आई, तो देखते हैं इस आई का बिहेवियर क्या होगा। लेकिन सर √(-1) तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर ऑफ द वर्ल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। सो दैट मीन्स √(-1) cannot exist, because if √(-1) was equal to x, then x square must have become equal to -1. अगर √(-1) x के इक्वल होता तो x का स्क्वायर -1 के बराबर हो गया होता। इसका मतलब ऐसी एक चीज सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का फितूर है। इस दिमाग के फितूर को मैंने नाम दे दिया आई, और आई नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि दिमाग का फितूर है, क्योंकि काल्पनिक है, क्योंकि इमेजिनरी है। सिंस ऐसी एक नंबर, या नंबर भी क्यों कहें उसे, ऐसी एक चीज अगर आप मानते हो कि उसको नाम देना ही है, तो उसको नाम भी क्या दिया गया, इमेजिनरी, दिमाग का फितूर। लेकिन एक बार आपने ये काल्पनिक नाम दे दिया तो अब इस काल्पनिक नाम के आसपास एक पूरी दुनिया बसने लगेगी। है ये आपके दिमाग का फितूर, है ये आपके दिमाग की घोर कल्पना, लेकिन इस कल्पना के अराउंड एक पूरी दुनिया ग्रो करेगी, और फिर उस दुनिया से निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा रियल वर्ल्ड के बहुत सारे फिनोमिना। This I is nothing but the creation of your mind, but the fantasy of your mind, but the imagination of your mind. But once you give it a name, then we are going to make one whole world of mathematics around this I. And I promise you once again that you will see that later on this imaginary world is going to become a source of dealing and analyzing so many physical phenomena. It has usage in real world at so many instances, and that we will see. As of now, if we have given it a name, let's start dealing with it. अब नाम दे ही दिया है इस कल्पना को, तो इस कल्पना के अराउंड जीना शुरू करते हैं। और मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। ध्यान से समझियो। अगर मैंने मान ही लिया है कि if I have assumed already that √(-1) is given a name I, that means if I square on both sides, I'm going to get -1 is equal to I square. So I get I square is equal to -1. What about I cube then? I cube will be equal to I square multiplied by I, but I square is equal to -1. So I cube can be written as -I. And I doesn't exist. और I जैसी कोई चीज एक्चुअली है ही नहीं। It's unreal. But what about I power 4?
I power 4 I can write as I square into I square. And I square is -1 and I square is again -1. So minus minus, this becomes +1. I have I is equal to root over -1. I have I square is equal to -1. I have I cube is equal to minus I. And I have I power 4 is equal to 1. Make a note of these four things. Make a note of these four things. ये चार बातों को कहते हैं ना, लोग चार बातें करेंगे, तो ये चार बातें जो लोग करते हैं वो यही चार बातें हैं। और इन चार बातों को नोट कर ले, क्योंकि ये चार बातें बड़े काम की रहने वाली हैं हमारे लिए। These four things are going to be of very much use to us. And how these four things are going to be of very much use to us? Let's see. अरे सेलेक्ट हो जा, बड़े भाव खाता है कभी कभी। On the basis of this, we can find out the any integer power of I. I की कोई भी इंटीजर पावर आपको फाइंड आउट करनी हो, सिर्फ इस बेसिस पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको फाइंड आउट करना है I पावर 509। अब I पावर 509 क्या होगा? I पावर 509 को I पावर 4 के मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। I पावर 4, 508 डिविजिबल है क्या? 508 डिवाइडेड बाई 4 इज 127। यस, सो मैंने इसे लिख लिया I पावर 508 प्लस 1। I power 508 plus 1, that becomes I power 508 and that becomes I power 127 into 4, or I power 4 into 127, I power 4 into 127, and then we have got I. So I'm going to get I power 4 power anything, which is 127 and I. But I power 4 is nothing but plus 1, and plus 1 power anything will be plus 1 multiplied by I. That becomes equal to 1 multiplied by I, and 1 multiplied by I will naturally be I. क्या ही तो बात है। ऐसे ही आप I की कोई भी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। You can find out any power of I this way. This way we can find out any real power of I. So real power of I कोई भी फाइंड आउट करना हो, आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई दिस वन। लेट्स से वी हैव I पावर 5367। बाप रे, I पावर 5367। Can we do this one? Can we pull this one out? Yes. What about 5364 divided by 4? It is 1341. So I can find out any number divisible by 4 which is nearest to 5367, and then I can write 5364 plus 3, and I can break this into I power 5364 and I cube, and 5364 can be written as I power 4 power 1341, and then I have I cube as well. I power 4 is nothing but plus 1, and power anything will become 1 only. I cube is what? I cube is minus I. I cube is minus I, so I get 1 into minus I. Final answer is going to be minus I. One very interesting result on the basis of these four things that we have observed. Number one, I is what? Root over -1. I square is what? I square is -1. I cube is what? I cube is minus I. And I power 4 is what? I power 4 is 1. But sir, wait a moment. I जैसा कहीं कोई कुछ है नहीं, है ना? True that. There's nothing like I. I is unreal. There's nothing, absolutely nothing like I existing out there. I is unreal. I एक पूरी तरह से unreal thing है. It's an unreal thing. It's a non-existing thing. But on the basis of this, we can get something interesting. For example, let's say I have I power 44 plus 45 plus 46 plus 47.
Then I power 44 I can write as I power 4 power 11, and this one I can write as I power 4 power 11 44 into I, and this one I can write as I power 4 power 11 44 covered, I square is remaining, and this one I can write as I power 4 power 11 and I cube is remaining. So ultimately, this becomes plus 1 power 11. This becomes plus 1 power 11 multiplied by I. And this becomes plus 1 power 11 plus 1 power 11 multiplied by minus 1. And this becomes plus 1 power 11 multiplied by minus I. My dear friends, I'm going to get 1 power 11 becoming 1. And this is I. And this 1 power 11 is 1 into minus 1, एंड लास्ट टर्म बिकम्स माइनस आई, वन ने वन को, आई ने आई को मार दिया और ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो. माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई वन मोर बिफोर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ जनरल कंक्लूजन. इससे पहले कि इसको एक जनरल कंक्लूजन में बदल सके, एक इसी तरह का और ट्राई करते हैं. जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट so that I can make some space. Okay, so here we go. Yes. Go up, go up, go up, go up, go up. Huh. Here we go. हेलो. हाँ, मैं करता हूँ आपको कॉल बैक. मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ अभी. ठीक है. हाँ. So let's try one more. And how about this time trying something bigger, like I power 533 plus I power 534 plus I power 535 plus I power 536. My dear friends, 533 के आसपास, 532, is it divisible by 4? Yes. So 532 is divisible by 4 into I. 532 is divisible by 4 into I square. 532 is divisible by 4 into I cube. And 536 itself is divisible by 4, but you can write 532 and 4 as well. Now, I power 532 will become I power 4 power 133 into I. And this will again become I power 4 power 133 into I square. I power 4 and total power 133 into I cube, and I power 4 power 133 into I power 4. So I'm going to get I power 4 is like this becomes 1, this becomes 1, this becomes 1, this becomes 1. And then I get I, and I square is becoming minus 1. I cube is becoming minus I, and I power 4 is becoming 1. 1 ने 1 को और I ने I को मार दिया. ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, लेकिन इस इमेजिनरी वर्ल्ड की कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम हमेशा 0 होगा. दिस इज एन इमेजिनरी वर्ल्ड, बट द सम ऑफ 4 consecutive powers of I is always going to be 1. My dear friends, here goes the general conclusion, and the general conclusion is that for any integer n, we will have I power n plus I power n plus 1 plus I power n plus 2 plus I power n plus 3 always becoming 0. Keep this in mind. This sum is always going to be 0. Cool. This unreal thing is going to now have an entire world of itself. एक काल्पनिक दुनिया, एक काल्पनिक एंटिटी, और उस काल्पनिक एंटिटी के अराउंड एक पूरी मैथमेटिक्स पैदा होने लगेगी. उस काल्पनिक
एंटिटी के अराउंड एक पूरी दुनिया पैदा होगी और फिर उस दुनिया से बहुत सारे रियल वर्ल्ड फिनोमिना एनालाइज होंगे. लेट्स सी हाउ इट गोस. सो लेट्स गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाउ. अब आप समझ चुके हैं कि ये काल्पनिक दुनिया एक आई से पैदा होती है और उस आई को हम आयोटा कहते हैं. दैट वी कॉल बाय द नेम आयोटा. गॉस वाज द फर्स्ट वन to introduce, not to introduce, it was introduced in 16th century itself, but गॉस का नाम आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सुना होगा. सो इलेक्ट्रिकल में गॉस का नाम सुनते हैं हम लोग, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी आप पढ़ते हो. गॉस वाज द फर्स्ट वन to show this to the world, that this imaginary world, this imaginary entity can be used in so many real practical scenarios. So many real practical scenarios can be simplified and can be analyzed using this imaginary entity called I.